which has really brainstorming question. Am I right? So that is involvement. Learners apply what they have learned in the real context, in the real world context. Nowadays, conception of competency. Whatever you learn in schools and colleges, that has to be applied to your personality development. This method is widely used in education, business and training. I said, no, madam, even training is being made experiential based. Training, see, internship training. Whatever the children learn in engineering college first semester, they are applying in their internship, training for 1 month. Same thing should be done in school. We are not implementing it. We are in Japan. The children at 6 or 7 class level go for internship learning. 6 and 7 level. Do you believe? And in India, we only send them for experiential learning after getting a technical degree or after entering into a stream. So don't you think there should be a change? Yes or no? Actually, when Japan has already implemented this, that in schooling there should be 6 months internship, 6 months teaching, no academic throughout the year. We are doing academic work throughout the year. We are not giving vocationalized training to the children. The education becomes meaningless. आगे बढ़ाइए सर. Next, experiential learning क्या कहता है? देखिए, it involves gaining knowledge by doing and reflecting. Every time when you go into the class, you ask the children to do something and they gather what they have learned from. That means they reflect upon the concept they have learned. That will be possible only when you will give them the chance to think and act, feel. Learning by reflection, by reflecting upon what I say, what I did. I gave questionnaire. Am I right? You all discussed. You reflected upon the previous knowledge that you have, because the topic was maybe that not fully known to you or half known to you. But you all discussed on. Tell me, my questionnaires, which I gave, made you reflect upon your previous knowledge or not? Tell me. And there you correlated the present scenario to your previous knowledge. So you reflected upon that and eventually you came to a conclusion that which you made to conceptualize on the topic. Am I right? So don't you think that we are doing the same thing that is being given by Paul? Are we not doing the same thing that is given by Paul? David Paul gave this. We are doing it. The only thing is that we are not making our children aware. Sir, जो हम लोग को बताया है तो 4 मॉडल है, क्या वो हम लोग क्लास नहीं कर रहे हैं? We are doing it. We are already doing it. The only thing that we have to make the children aware that look, your previous knowledge, your concrete knowledge plays an important role. So you don't think that you are blank. Never think that the child is blank when he comes to class. Experiential learning involves gaining knowledge by doing and reflecting. It contrasts, yes, lecture-based learning is no more valid. Can anybody tell me? Yesterday, sir gave very good answer and he asked me the question. I couldn't satisfy his question actually because I was at fault in the beginning, but later on I corrected myself. Sir said, this child-centric education should be there. Participant-centric, अभी हो गया, आज हो गया. सर बात को जारी हमने हमें दिया. Learner-centric education is required. Am I right? What had been done earlier? Teacher-centric education. Teacher is giving the lecture. Teacher-centric था करें. The children are the silent listener. How long they will listen to your lecture? Involve them in the learning process. Am I right? And that requires your ability. Teacher's ability is tested. Only he or she is capable of making the children engage in the class. And for that, experiential model is very important. Do not just straightforward start delivering the lecture. बहुत सारे lectures जो हमारे जाते हैं. देखो, today we are going to talk about motion. You know, whenever a body moves from one place to another place, there is some sort of displacement. You know, displacement. And when displacement is rated on a scale
it is motion. The moment this lecture is being given, the children are unaware of what is displacement, what is rated with. These words are out of their mind. And you ask them, look, what happens when your papa, accelerates the bike? The bike starts running fast. Why? Why does the bike start running fast? This is a real life experience. Am I right? Even children have experience driving the bike. Am I right? What happens when you accelerate the bike? It starts running fast. And what happens when you apply a brake? So what is a brake? I would like to ask, can brake be compared to an external force or not? So when you are talking about inertia, why can't you say that when a brake is applied to stop the vehicle, it is something like external force? Am I right? The child will correlate into physics. Am I right or wrong? But we do not give the real life example. What do we do? Look. See this straight line. Your body is moving on that. Now there is an obstacle. You are showing the picture of the book, which is no more valid. Am I right? Book का जो picture दिखाइएगा जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के पढ़ाते लाइक है तो बुक का जो जब तक बच्चा को खुद ड्रॉ करके अपने से नहीं ड्राइंग करेगा और फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर सब अपने से जब तक ड्रॉ करके समझेगा नहीं, आप 1000 बार पढ़ा दीजिए, न रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझेगा न रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझेगा, एकदम मैं आपको दवा सकता हूँ. But the moment you ask them to draw the diagram in terms of lens and in terms of mirror, and they will teach this, they will learn very well. You will say, yes sir, this is the center of curvature. They will say, yes sir, perhaps this is the focal length. You will not tell, they will tell, because they have now got complete experience through picture. Am I right? Do you agree with me or disagree? You can decide. Agree now? That's why CBSE includes art integration in. Yes, art integration learning. Madam, you are absolutely right. And the approach of learner-centric learning is very dynamic. Dynamic word is a very nice word. Can anybody help me in telling what is dynamic and what is non-dynamic? What do we call it? There is a word passive. And there is a word dynamic. Static. Sir, please answer it. IT वाले भी काम नहीं है. छुपे ऑफिस में तो साइड पे मैडम को जाके बोलिएगा कि मैडम को जाके बोलिएगा कि सर ने मेरे तरफ से आपको एक शायरी दिया. मैंने आप बोलिएगा, जरूर बोलिएगा. देखिए, सुन लीजिए, मैडम को बोलिएगा. मैडम है ना तरोताजा? अरे रियली? काश हम देख सकते. अच्छा देखिए, जब खामोश निगाहों से बात होती है, जब खामोश निगाहों से बात होती है, तो ऐसे मोहब्बत की शुरुआत होती है. आप मैडम को बोलिए, अभी तो वही लाइन हुआ है, अभी 2 लाइन बाकी है. फिर एक सो हम रिपीट कर रहे हैं. जब खामोश निगाहों से बात होती है, तो ऐसे ही मोहब्बत की शुरुआत होती है. तुम जब मुस्कुराती हो, दिन में भी रात होती है. कैसा? ये जाके कहिएगा, तुम जब मुस्कुराती हो, दिन में भी रात होता है. नहीं, दिन में रात बना देते हैं. आप नहीं समझे, उल्टी गंगा है. आप आईटी वाले को अंडरस्टिमेट मत कीजिए मैडम, बहुत रोमांटिक है सर. तो अच्छा कैसा लगा आपको? मैडम को कन्वे कर दीजिएगा, हम ये पेज फाड़ के देंगे. प्रॉब्लम नहीं, आप कन्वे कर दीजिए. सुनने का मूड में रहिए, सुना दीजिए. अरे ऐसा अब मेरे बात आ गई. ये मूड बनाना आपका काम है. 8 बजे के बाद मूड बन ही जाएगा. 8 बजे तक नहीं होगा. बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? अच्छा, बहुत अच्छा. अच्छा, बाबू कहाँ है? अच्छा,
माया में से सुपर टर्टल। ठीक है, मतलब कब वो क्लास रहती है? तो सुने ना, सुबह को ही रात बना दीजिए, क्या क्या खबर? अरे भाई, ये तो हमारे अपने हाथ में है, हम सुबह को रात बना सकते हैं, रात को सुबह बना सकते हैं। शायरी सुना देंगे। हाँ, ये इतना देर के बाद सर क्या मतलब एडीसी को तो आप एकदम बिल्कुल धो दिए। बताइए, हम कर रहे हैं सर, आपने लव मैरिज की है, आपसे मेरा आग्रह है, लव और मैरिज दोनों एक साथ होगा क्या? आपने बताया सर, एक फोटो देखिएगा, आप मैडम को देखिएगा, मैडम को आधी चीज का फोटो नहीं खींचना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए आगे। और ये हम आपको बोल रहे हैं लव और मैरिज, क्या दोनों को इंटीग्रेट किया जा सकता है? सर ये तो आपको दूर जहां से पूछना है। नहीं, लेकिन चीज आपने लव मैरिज किया है सर। देखिए, हम लोग के जमाने में मैडम अरेंज मैरिज था, अभी तो बहुत कुछ हो रहा है। सर पहले के जमाने में लव मैरिज था, जब भगवान जी लोग अपने रानियों को हक मैं- दिलाते थे ताकि उसको लव मैरिज हाँ, बहुत पहले बोल रहे, लेकिन बहुत पहले। मैडम बहुत पहले था, बहुत पहले सर था। एक चीज है। सर मैं नाम है पूरा हरीश चौहान। अच्छा। ठीक है, चौहानों का इतिहास गवाह है कि हमारे यहाँ तो प्यार में युद्ध भी हार जाते हैं और युद्ध में बड़े बड़े को हम लोग अपना राज्यपाल नहीं छोड़ देते। क्या बात है। ठीक है, तो प्यार का कहानी है सर कि हम लोग ना नहीं जानते, कहानी है जवाब नहीं, लेकिन अगर शिव पार्वती अर्धनारीश्वर का भी हो सकता है। अरे वाह वाह, ठीक है, और हमारे यहाँ विष्णु देवी और लक्ष्मी जी का प्रचार मनाया जा रहा है। सही बात। सर अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा चालू होने वाला है। जी, जी। देख रहे हैं जी जी कि जगन्नाथ जी के जो यात्रा निकलता उसमें उनकी बहन को उनकी वाइफ को ले लिया था। तो क्यों ले लिया था, ये प्रश्न चिन्ह बोलता है कि मोहब्बत क्या होती है, इसे जानने के लिए भाई बहन का प्यार देखें। मोहब्बत क्या होती है, उसको जानने के लिए माता पिता का प्यार देखें। मोहब्बत को आप बस एक ही पैमाने से देखते हैं, शायद वो वही पैमाना है जिस व्यास को देख के आप भरा हुआ और आधा खाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी बात आप चौहान हैं? अच्छा, मतलब पृथ्वीराज समझ रहा है सर अपने आप। सर समझने का नहीं, लेकिन इतिहास से कुछ तो सीखना चाहिए। डुबा दिया देश को। और एक चीज है सर चाणक्य से भी ज्यादा सुनिए सर, एक जो आप खड़े हैं वो बाबू सर हैं, बैठे। सर एक बात कहते हैं, चाणक्य का इतिहास है। हाँ, पता है चाणक्य की नीति पढ़ेंगे, पढ़े हैं, पढ़े। लेकिन चाणक्य नीति में हर जगह औरतों को बुराई किया गया है। आप से पढ़िएगा सर, पहला करने के बाद दूसरा सर ये चीज सर बहुत अच्छा बोले सर, इतिहास गवाह है सर का बात से हम एग्री करते हैं कि क्षत्रियों ने बलिदान दिया है सर। एक बात को आप सेंस ऑफ ह्यूमर बोल रहे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कल उन्होंने बलिदान दिया, कल देश के लिए दिया। कल बोल रहा अच्छा था। चलिए, कम टू पॉइंट सर, इट प्रमोट्स डीपर अंडरस्टैंडिंग। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रमोट्स डीपर लर्निंग? एग्री और डिसएग्री? ओके, आगे बढ़िए सर, वेरी गुड। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इनहांसेस रिटेंशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रट के बच्चा कितना लिखेगा नहीं समझे, बट इफ वी लर्न थ्रू एक्सपीरियंस इट विल परपेचुएट द नॉलेज। तो आगे के बहुत सारे बच्चे रट्टा मार देते हैं, लेकिन वो आगे चल कर गड़बड़ा देता है। तो रिटेंशन इज बेटर परपेचुएटेड थ्रू एक्सपीरियंस। तो इसीलिए कहा गया है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग हेल्प्स इन रिटेंशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। ब्रॉडर आइडिया कम्स। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया का मतलब होता है ब्रॉडर है। हमारे भाई सर एक लाइन जरूर बोलेंगे सर, when a child is confined to the topic, he will not be comprehensive in dealing with other topics. Am I right? So what should we do to make his knowledge comprehensive? Sir has better idea because sir is a very good teacher of English. I know him. First of all, I would like to tell something about the word education. Yes, yes, sir. Please, I am sir. Sir, sir, I will put him in. I will put him. When we talk about the word education, that it is a combination of three words. Yes. Educator, educator, and educator. When we talk about the word
educare, which means the formal education, whatever we are imparted at home by our parents. Moments ago you were talking about experimental learning, so I would like to tell you something. Suppose we are forbidden by our mom, do not touch a hot glass which is full of milk or hot milk, whatever. And a child does not agree, does not follow, and somehow, some way, he touches the hot glass. So that time, whatever the word he experiences, that he cannot forget till the end of life. That is called experimental learning. And regarding the same, whatever the experimental learning, that is perpetual. Perpetual means that repeated 2 times, 3 times, 4 times. So sometimes we need to inculcate the children repeating the same thing again and again. For example, in our primary classes, just go to a class 10 and that time just recall some things when we were studying in our primary classes. So that time just we were taught by number of times it was repeated. So number of times it was repeated, so that inculcated in the mind so betterly, and thereafter whenever it is asked or it will be asked without any deep thinking in the mind, randomly the correct answer comes out. Sir, it's really great. Thank you, sir. I love your words. Yes, very good. You are really very बोलेगा ना, लड़ाई नहीं ना, ये बताओ, कैसे कहाँ फंस गया? सर बोलिए कि क्या बात है? दूसरे का सर ग्रेट। आज लगेगा अभी मत जाइए, अच्छा है, चाय आ गया, आज ब्रेक होगा, चाय ब्रेक होगा, टी ब्रेक, हाँ भी चाय, हाँ टी ब्रेक, एंजॉय टी ब्रेक, हाँ सर, बोलने रियली, सर इधर गोस्वामी सर अरे बाबा, हाँ हमारे गाना सुनेंगे, गोस्वामी सर आप अपने प्यार भरा साइड दिए सर, आप घर को जान लगा देख लीजिए, हमारे को मेहमानी नहीं, हम घरों चले जाएंगे, सुनिए हमसे जब गुरु हो गए, हो गया, कौन है जनरल कोई निकल आ गया, आइए, गोस्वामी सर सबको मौका हमारे को फेंक के हम कहाँ छिड़ रहे हैं। ये देखिए सर, हमारे स्कूल का प्रयास है कि दूसरे के प्रति जो मुझे किसी के घर रात में आते किसी तरह के तो मेरा नाम लिया ऐसे जो कोई खाते होते हैं पूरे दुख भरे जीवन में पूरे एक स्माइली है जो सबको छिपा देता है। मैडम सुनते जाइए, चाय की स्वाद बढ़ जाएगी, मैडम चाय का स्वाद बढ़ जाएगी। नींद चुराने वाले पूछते हैं यहीं से, मैडम तुम्हें बैठो, मैडम को कहाँ हो, सर ही बोल रहा है, नींद चुराने वाले पूछते हैं सोते क्यों नहीं, नींद चुराने वाले पूछते हैं सोते क्यों नहीं, इतनी ही फिक्र है तो हमारे होते क्यों नहीं। आपके लिए था, आपके द्वारा था, अब आगे बढ़िए। जी सर, जी बहुत थका हुआ अब अभी भी वही सेम जब आप गाएंगे ना, मैं आपको ईश्वर करता हूँ कि आपके सारे और क्या सर, हाँ वो फांसी का भी अच्छे से तो कुल मिला करके कुछ
क्या? ठीक है सर। वहाँ पर कुछ होना